everyone, welcome back to my channel. I hope you have watched my previous video which was Fundamental Rights Part 1. This is Fundamental Rights Part 2 in which I have covered right to freedom and right against exploitation. I have discussed in detail from Article 19 to Article 24. In this video, I have covered the 6 freedoms which are granted under Article 19 along with their restrictions. I have also covered about the doctrine of double jeopardy, punitive and preventive detention, and the trafficking in human beings. Let's get started. So, the very first we have is Article 19, which says right to freedom. Personal liberty is the most important of all the fundamental rights, and Article 19 to 22 deal with the different aspects of this basic right. Article 19 guarantees the following 6 fundamental freedoms to the citizens of India. The first one is freedom of speech and expressions. The second is freedom of assembly. Then we have freedom to form associations, freedom of movement, freedom to decide and to settle, freedom of profession, occupation, trade, and business. The freedoms enumerated in Article 19, Clause 1 are those great and basic rights which are recognized as the natural rights. The very first we have is the freedom of speech and expressions, that is 19 clause 1 subclause A. It says that all the citizens shall have the right to freedom of speech and expressions, but this right is subject to the limitation which is imposed in Article 19 clause 2, which empowers the state to put reasonable restrictions on the following grounds. The first one is the security of the state, friendly relations with the foreign state, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement to offense, and sovereignty and integrity of India. यानी कि जो ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस मिले हुए हैं ये भी रिस्ट्रिक्टेड हैं इन ग्राउंड्स पे. Sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations with foreign state और ये सब. The also freedom of speech and expressions includes the freedom of press. 19 clause 1 subclause B includes freedom to assemble. Freedom to assemble secures to all the citizens of India the right to assemble peaceably and without arms. Thus, there is a right to hold public meetings and demonstrations and to take out the processions peacefully. Under Article 19, Clause 3, reasonable restriction can be imposed on the rights by the state or by the law in the interest of the integrity of India or the public order. Thus, an assembly declared unlawful can be validly banned. तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है. आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में वो है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर. Then we have Article 19, Clause 1, Subclause C, which is freedom of association. This article guarantees to all the citizens the right to form association and union for the pursuing lawful purpose. Under Article 19, Clause 4, reasonable restriction can be imposed by the state in the interest of sovereignty and integrity of India or public order. Then we have Article 19, Clause 1, Subclause D and Subclause E, which is freedom of movement and residence. Talking about Article 19, Clause 1, Subclause D, it is to move freely throughout the territory of India. And talking about Article 19, Clause 1, Subclause E, is to reside and settle in any part. The right of every citizen of India is to move freely throughout the territory of India, and his right to reside and settle in any part of the territory of India is guaranteed under Clause D and E, respectively. Article 19, Clause 5, however, provides for the imposition of reasonable restrictions on the exercise of these rights by law in the interest of the general public or for the protection of the interest of any scheduled tribe. Then last we have is Article 19, Clause 1, Subclause G, which is freedom of profession and trade. It guarantees the freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. एक रिकैप कर लेते हैं आर्टिकल 19 का. तो जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है. इसमें हमें कुछ फ्रीडम मिले हुए हैं. 6 फ्रीडम्स हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस विच ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, freedom to assemble peacefully, freedom to form association, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part, and freedom to practice any profession. फिर इसके कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स,
public order, decency, morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense. अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 20. Article 20 talks about protection in respect of conviction of offences. Article 20 basically affords protection against arbitrary and excessive punishment to any person who commits an offence. Article 20 is divided into three clauses. The clause 1 is protection from ex post facto laws. It says legislature can make either prospective nature laws और retrospective nature laws. Prospective nature is कि अगर आपने आज कोई लॉ बनाया है और कल से वो ऑफेंस होना स्टार्ट होता है तो कल से वो पनिशेबल होगा. यानी कि अगर आज लॉ में किसी ऑफेंस को लेके से किडनैपिंग को लेके आज से कोई लॉ बना है तो अगर कल से कोई किडनैपिंग होती है तो वो उस पर एप्लीकेबल होगा, ना कि जो किडनैपिंग 1992 में हुई हो. देन टेकिंग द एग्जांपल फॉर रेट्रोस्पेक्टिव नेचर, अगर लॉ आज बनाया है लेकिन अगर 1994 में भी कोई गलती हुई होगी तो वो भी पनिशेबल होगी. तो जो 20 क्लॉज 1 है वो ये कहता है अगर आज कुछ ऑफेंस किया है तो आज के लॉ के हिसाब से ही गवर्न किया जाएगा. इट स्टॉप्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग रेट्रोस्पेक्टिव लॉज इन क्रिमिनल मैटर्स. Article 20 clause 2 talks about the doctrine of double jeopardy. It says that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. The objective of this article is to avoid the harassment which must be caused for the successive criminal proceedings where the person has committed only one crime. Then we have the case of Thomas Das versus State of Punjab, जिसमें हमको 3 कंडीशंस मिली हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में. तो पहली कंडीशन ये है कि आप अक्यूज़ होने चाहिए किसी ऑफेंस के, उस ऑफेंस की प्रोसिक्यूशन चलता होना चाहिए और जो उस प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट है वो पनिशमेंट होना चाहिए. यानी कि सपोज एक्स है, उसको प्रोटेक्शन लेनी है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में, तो एक्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया, उस जो वो ऑफेंस है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है और जो वो प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसका रिजल्ट पनिशमेंट है, तो ही वो प्रोटेक्शन ले सकता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में. देन वी हैव आर्टिकल 20 क्लॉज 3 which provides protection against self-incrimination. Article 20 clause 3 of the Constitution says that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself. It is based upon a legal maxim which says no man is bound to accuse himself. The accused is presumed to be innocent till his guilt is proved, and it is the duty of the prosecution to establish the guilt. Also, Article 20 clause 3 के 3 कंडीशंस हैं. The first one is कि आपके ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज होना चाहिए. The second one is आप कंपेल हो रहे हो विटनेस देने के लिए. You are compelled to be a witness उस ऑफेंस के लिए, और वो जो विटनेस और एविडेंस है वो आप ही के अगेंस्ट है. Then we have Article 21 which is protection of life and personal liberty. It is inspired from the American Constitution and is the shortest article in the Indian Constitution. It enacts that no man should be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. In the case of Maneka Gandhi versus Union of India, a test of reasonability was passed. यानी कि कोई भी प्रोसीजर जो पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करता है उसको इस रीजनेबिलिटी टेस्ट से पास होना था. वो जो प्रोसीजर है वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए था. तो जनरली पीपल थिंक कि अगर आपके पास कुछ करने का हक है तो कुछ ना करने का भी तो है. यानी कि वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई ऑल्सो. तो इसका आंसर दिया गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि राइट टू डाई इज़ नॉट प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 21. It says that you cannot give away the fundamental right of right to live. आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सकता था. ऐसा आज तक सिर्फ 3 बार हुआ था. 1962 में ड्यूरिंग चाइनीज़ अटैक, 1971 में ड्यूरिंग पाकिस्तान अटैक एंड 1976 में ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी. एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 21 को आप इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर सकते हो.
लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट आया जिसमें ये लॉ आया कि इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 21A जो इंसर्ट हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002 में, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years. This provision makes only elementary education as the fundamental right and not the higher or professional education. फिर है आर्टिकल 22, इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो पहले हम देखते हैं डिटेंशन। डिटेंशन दो टाइप्स के होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, मतलब एक्ट या कोई ऑफेंस करने के बाद। और प्रिवेंटिव होता है क्राइम होने से रोकना। आप एप्रीहेंड करते हो कि किसी के पास कोई पोटेंशियल है वो क्राइम करने का, वो क्राइम रोकने के लिए आप जब उसको अरेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2 कवर्स प्यूनिटिव डिटेंशन। 22 क्लॉज 1 कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 दो चीज़ें बताता है। पहली ये कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है वो आपको बताना ज़रूरी है, और दूसरा right to consult a legal practitioner. Any accused who is not been able to appoint for themselves a legal practitioner due to any reasons can demand from state of free legal services. किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर अपने लिए अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, मे बी फाइनेंशियल या कुछ भी, तो स्टेट से वो डिमांड कर सकता है अपने लिए फ्री लीगल सर्विस। फिर है 22 क्लॉज 2, it is right to be produced before a magistrate within 24 hours after arresting. फिर आता है 22 क्लॉज 3 जो ये कहता है कि nothing in clause 1 and 2 shall apply to any person who for the time being in enemy alien or to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. फिर आता है 22 क्लॉज 4 जो ये बोलता है कि कोई भी डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो एडवाइजरी बॉडी उस पर अग्री करनी चाहिए, और जो उसका मैक्सिमम टाइम है डिटेंशन का वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर क्राइम के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में दिया गया हो। फिर आता है 22 क्लॉज 5 जो कहता है इट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट टू द रिटेंटी। फिर आता है 22 क्लॉज 6 जो ये कहता है ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22 क्लॉज 5 इफ़ इज़ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट देन इट नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डिटेंटी को प्रोवाइड करने से पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करती है 22 क्लॉज 5 में, तो वो नहीं देनी है। 22 क्लॉज 7 कंसिस्ट ऑफ द केसेस इन विच टाइम कैन बी एक्सटेंडेड, what procedure is to be followed by the advisory board, and the time prescribed in the different preventive acts to be decided by the parliament. Quickly revise कर लेते हैं। Article 22 basically guarantees 3 rights. The first one is it guarantees to the right of every person who is arrested to be informed of the cause of the arrest. Secondly, his right to consult and to be defended by a lawyer of his choice. And thirdly, every person arrested and detained in the custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours. Article 22 clause 1 says every case of preventive detention must be authorized by law. It cannot be at the will of the executive. Second says no law of preventive detention shall normally authorize the detention of a person for a longer period than 3 months. Thirdly, every case of preventive detention for a period longer than 3 months must be placed before an advisory board composed of a person qualified for the appointment of a high court judge. Fourthly, no person who is detained under any preventive detention can be detained indefinitely. There shall always be a maximum period of detention which is prescribed by the parliament. Then fifth is in case which are required to be placed before the advisory board, the procedure to be followed by the board shall be laid down by the parliament. Then when a person is detained under a law of preventive detention, the detaining authority shall communicate to him the grounds
and it should also afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. Then we have Article 23 and Article 24, that is right against exploitation. Article 23 says it prohibits trafficking in human beings and forced labor. It basically militates against the human dignity. Under the old zamindari system, the tenants were sometimes forced to render free services to their landlords. The Devdasis are also covered under the term traffic in human beings. Then we have Article 24, which prohibits employing of children below the age of 14 years in any hazardous employment. This is in keeping with the human rights concepts and the United Nations norms. It was stated in the MC Mehta versus State of Tamil Nadu that the children below the age of 14 years cannot be employed in any hazardous industries, mines, or other work. It was in this case only that it was held that the exhaustive guidelines were given to the state authorities of how they should protect economic, social, and humanitarian rights of millions of working children. I hope I have made right to freedom and right against exploitation clear. You can also follow us on Instagram. I will attach the link in the description box below. Thank you so much for watching. See you in the next video.